Hi guys, how are you? So we meet again and the same wishes continue कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरह चल रही होगी एंड ऑल ऑफ यू आर हेल एंड हार्टी फिट एंड फाइन, आपके घर में सारे लोग ठीक हैं. आई रियली ऑलवेज कीप विशिंग फॉर द सेम. तो चलिए लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वीक और वन मोर वीक ऑफ करंट अफेयर्स. जो कि पिछला हफ्ता बीता उसमें क्या क्या टॉप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे, उससे हम क्या जीके सीख सकते हैं, क्या बिजनेस अवेयरनेस सीख सकते हैं. एंड या जस्ट होपिंग कि आवाज़ अब भी ठीक आ रही होगी, नॉट लाइक वन ऑफ दोज अर्लियर वीडियोज़ जिसमें आवाज़ एकदम ही फट गई थी पता नहीं फॉर सम रीज़न. तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते. व्हाट हैपेंड इन द वीक ऑफ 8th to 15th of June, लेट्स क्विकली पिक इट अप एंड सी व्हाट डू वी हैव. सो पहले तो यार इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ और उसको डिस्कस करना चालू करूँ, आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली होपिंग कि आप लोग न्यूज़ देख रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो. यार आप लोगों ने इतनी बारी मेरे से क्वेश्चन पूछा कि न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है. मैं हमेशा उसका जवाब देता रहता हूँ. सो आई एम रियली होपिंग कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आप थोड़ी देर न्यूज़ देख रहे हो. आपने इनफैक्ट ये भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे वीडियोस किस टाइम पे देखना है, उसका भी मैंने जवाब दिया था कि लंच करते हुए देख लो, डिनर करते हुए देख लो, बिकॉज इट्स लाइक इट्स एज गुड एज वॉचिंग द न्यूज़ ऑनली, राइट? बिकॉज दीज आर दी न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ क्लिप्स. सो उस टाइम पे प्लीज़ इसको देख लो, सो दैट कभी ये मत बोलो कि मेरा ये टॉपिक छूट गया, मेरा वो टॉपिक छूट गया. टाइम बनाना पड़ेगा और टाइम कहाँ बनाना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको बार बार. तो चलो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट आर्टिकल दैट आई पिक्ड अप फॉर यू. सो व्हाट हैपेंड रिसेंटली वाज, out of the blue suddenly कुछ major websites worldwide they stopped working on 8th of June, which included the websites like Amazon, which is the biggest one of the biggest shopping portals in the world, Guardian, which is a news network, Reddit, which is a content sharing platform and a knowledge sharing platform, CNN, which is a news website. So all these major websites all over the world crashed, and it crashed because of a single customer trying to make some changes in the code from with their content provider. तो उसने and there was a bug. The bug went unnoticed for a very long time, and because of that bug, the moment the customer pushed in some changes into their network, उसने सारे network को down कर दिया. Now the question is, see, this is just a high level news article. The important facts around it, that what happened. So in this case, the content delivery network, or the network on which all these websites were operating, sending out their content, is called Fastly, Fastly. Okay, तो मैंने उसको बोल्ड भी कर दिया. अगर आप देखोगे अच्छी तरह से इन दी it should be right above my video, Fastly. And what is Fastly? Fastly is a content delivery network, जिससे कि वो कंटेंट कंज्यूमर्स तक, हमारे तक आता है, राइट? सो अमेजॉन जस्ट होस्ट द वेबसाइट पर, वो कैसे राउट होगा हमारे एंड यूज़र तक, what should take precedence, the speed at which it will come, the packet sharing, all that is determined and enabled by the content delivery network, right? So in this case, where the content delivery network was Fastly, और जो भी Fastly, जहाँ पे भी Fastly डिलीवर कर रहा था इन वेबसाइट्स को, वहाँ पे वो डाउन हो गया था फॉर अ वाइल. एंड जस्ट इन केस द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, बिकॉज एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और जो एंड की तरफ एंट्रेंसेस पुश होंगे उसमें अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDN, सो द फुल फॉर्म ऑफ CDN इज़ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं. सो I have again tried to stay away from COVID as much as possible. एक दो आसपास आ जाएं, बट हाँ कोविड की ना दुखदाई खबरें ना कोई बुराई ऐसा. So I have literally distanced myself from that world of news. So now another news from the pharmaceutical industry. So US has approved a underskin weight loss vaccine. It's not really a vaccine but an injection. Vaccine is जो आप लगाते हो to prevent any illness in future, and injection could be for so many things, right? It could be for immediate requirement also. Tetanus, आपको चोट लगी, कट गया, तब tetanus का injection लगता है. Then there are other injections also. There are painkiller injections, right? You have terrible pain somewhere और उसके लिए देना पड़ेगा. और there are anesthetics कि ऑपरेट करना है तो anesthetics दिया. So there is a difference between what is an injection and what is a vaccine. So US has approved an underskin injection for weight loss called Wegovy, right? नाम बोल्ड कर दिया है. Wegovy is the name of the injection. अब
इट्स नॉट समथिंग कि मैं ठूसता रहा, खाना ठूसता रहा और उसके बाद चलो मैं जाके एक इंजेक्शन लगा लेता और मेरा वेट लॉस हो गया. नो, इट इज़ नॉट डिजाइन टू बी दैट. इट इज़ वीगोवी इज़ एन इंजेक्शन विच हैज़ बीन इन्वेंटेड फॉर क्रोनिक weight gain. So there are a lot of people, for example, people with diabetes, people with other pulmonary issues, because of which they tend to gain weight very quickly. So they tend to gain weight. You might also know a lot of people, and see, this is not nothing related to shaming anyone for their weight. No, not at all. Some people gain weight because it's sort of the design of their body, right? It's their pulmonary system or it's their health issue. So please never make fun of people who put on weight. It's one, it is very bad to hog कि ठूसते रहे, खाना ठूसते रहे और किलो के भाव, टन के भाव में वजन बढ़ गया, वो बहुत गलत बात है. That is obesity. But weight gain can be for many other reasons. So never make fun of people. It is a very bad practice, very bad habit, by the way. And the reasons could be health issues, the reason could be pulmonary issues, which are again health issues. So Wegovy is a solution to that, that people who really were affected badly by the weight gain, they can start. So this injection will start dissolving the unnecessary fat in the body. That's how it is designed to work. Okay. एंड इसमें ये भी हुआ था कि अगर आप लास्ट लाइन देखोगे, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट यूएस हैज़ रियली अप्रूव्ड एनी सच काइंड ऑफ ड्रग इन अ लॉन्ग टाइम. लास्ट टाइम ऐसा कोई इंजेक्शन ओबेसिटी के लिए अप्रूव हुआ था 2014 में. ऑल राइटी, चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं. और ये कोविड से कोई बुरी खबर नहीं है, कोविड से अच्छी, इट्स अ गुड न्यूज़ लिंक टू कोविड. सो अ विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड वेयान became the first village in India where everybody above 18 was fully vaccinated. और रिमोट विलेज है, यहाँ तक जाने के लिए जो वैक्सीनेशन क्रू था, जो टीम थी, उसको भी दे हैड टू ट्रैक फॉर 18 किलोमीटर्स ऑन फुट टू बी एबल टू रीच दिस विलेज. यहाँ पे 362 people were adults above 18 and each one of them was fully vaccinated. So Jammu and Kashmir's Weyan village becomes the first village in India where everybody above the age of 18 is fully vaccinated against COVID-19. And now I was just reading the news while recording today morning. I was reading the news. There's a village in Chhattisgarh also where every registered voter, every registered individual above the age of 18 has also been vaccinated. दोनों में थोड़ा सा अंतर है. जम्मू कश्मीर वॉज अंडर द म्यूनसिपैलिटी मैनेजेबल. द विलेज इन छत्तीसगढ़, वहाँ पे क्यों काउंट नहीं है? बिकॉज इट इज़ अ माओइस्ट अफेक्टेड प्लेस इन द मिडल ऑफ द जंगल. सो रियली लिटिल डिफिकल्ट टू फिगर आउट द सेंसस ऑफ दैट प्लेस, राइट? चलिए, सो दीज आर द टॉप आर्टिकल्स और टॉप थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट वीक. लेट्स सी और क्या क्या हुआ है इसके अलावा. And I'm moving a little fast because I just want to touch upon the important topics and आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसको देखते हुए और वीडियो एक्सेसिवली लंबी ना हो जाए. ओके, Open Skies Treaty. Now, Open Skies Treaty was that between US, Russia and a couple of other countries, they agreed that these countries would be able to carry out unarmed photographic missions over each other's spaces, over each other's skies. So that meant कि US का प्लेन रशिया के ऊपर से फ्लाई कर सकता है, रशिया का प्लेन US के ऊपर से फ्लाई कर सकता है, सिर्फ फोटोज़ लेने के लिए कि वो what is their progress in terms of arms race. वो आर्म डिप्लॉयमेंट तो नहीं कर रहे, आर्म्स एंड एमिनेशन डेवलप तो नहीं कर रहे, न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं डेवलप कर रहे. सो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ पैक्ट कि हाँ ठीक है, आप देख लो हम क्या कर रहे हैं, हम देख लेते हैं आप क्या कर रहे हो, हम आपकी कंट्री में घुस के नहीं देखेंगे, विल जस्ट डू एरियल फोटोग्राफी ओवर योर कंट्रीज़. तो इसमें यूएस ने काफ़ी सारे फ्लाइट्स उड़ाए, रशिया ने काफ़ी सारे फ्लाइट्स उड़ाए, बट एसेंशली एंड ऑफ द डे नहीं चल पाया बिकॉज रशिया, you have seen over the past few months what has been happening in the US-Russia relationship, especially and to de-escalate that Joe Biden met Vladimir Putin. वो भी एक दो दिन पहले की बात है न्यूज़. So in the process right now what has happened is Russia has pulled out of the Open Skies Treaty. So Russia is saying nobody is going to fly over Russia हमारी फ़ोटो खींचने के लिए. आपको कमर्शियल प्लेन्स उड़ानी है, पैसेंजर लेके जाने ले जाओ, बट हमारे देश के ऊपर उड़ के हमारे मिलिट्री और हमारे आर्मामेंट्स की फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो रशिया हैज़ ऑफिशियली पुल्ड आउट ऑफ द ओपन स्काइज ट्रीटी. कूल. एंड
thankfully another good news, not with respect to COVID but with respect to the vaccination. So हमारी जो homegrown vaccine है, which was 100% homegrown COVID vaccine, Covaxin, right? We had Covishield, which was AstraZeneca, which is a US company, US Euro establishment. AstraZeneca was being manufactured by Serum Institute of India, but now the other vaccine, Covaxin, which was 100% homegrown by Bharat Biotech, Covaxin का license लिया है एक Canadian company ने, which is called Ocugen, right? So Ocugen, which is a Canadian company, is now going to retail Covaxin in Canada. So which is it's great news for us, because एक तो because in this vaccine diplomacy what happened was Covaxin अगर आप लगा रहे हो and you're trying to travel abroad, तो आपको वापस भेज दिया जा रहा है सेइंग कि नहीं, अप्रूव्ड वैक्सीन लगा के आओ, जैसे कि कोविशील्ड हो गई, सिनोवैक हो गई, इस तरीके की अप्रूव्ड वैक्सीन लगा के आओ, फाइज़र की लगा के आओ. एंड with Covaxin now going to US and Canada, it would mean that it will naturally get the approval that is needed. तो जिन इंडियंस ने कोवैक्सीन लगाई है, they'll उनको दिक्कत नहीं होगी एंड they'll be allowed to freely travel. But let's see it, वो approvals और वो notifications अभी आनी बाकी हैं अभी. Okay, but it's a great news for India, and something that is developed in India is being taken over, acknowledged by the whole world, and is being taken up by them कि हमें भी चाहिए. So it really feels happy to be an Indian and our achievements. ओके, तो एप्पल का WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुआ था थोड़े टाइम पहले, एंड इन दिस वेरी वीक, एंड उसमें एप्पल ने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स डिक्लेयर किए थे. नो हार्डवेयर वॉज डिक्लेयर्ड, सो डोंट थिंक कि iPhone 13 लॉन्च हो गया, मैं लेने भागता हूँ, नहीं. इट वॉज द डेवलपर कॉन्फ्रेंस विच एप्पल holds, and as part of it they declared a lot of software improvements that will happen, something like surround sound in your Mac devices, or secure browsing, which is जिसके Google बहुत ही against है कि इससे ad revenues बहुत कम हो जाएंगे, but Apple said no, we are going to give secure browsing to our customers. So what is secure browsing? So they have a technology called private relay. तो जो Apple ने technology सिक्योर ब्राउजिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, एंड नाउ विच इट इज़ गोइंग टू ऑफर टू इट्स कस्टमर, इज कॉल्ड प्राइवेट रिले, राइट? सो दैट्स द इंपॉर्टेंट न्यूज़. And just to understand, it's a little different from VPN. So VPN is virtual private network, where you create a tunnel you create a tunnel network which is secure, and which bypasses the other requirements of the place from where you are browsing. But private relay में क्या है? It is browser based security. आपका browser prevent करता है unnecessary hacks को, unnecessary interferences को, unnecessary somebody snooping on your browsing behavior. So it's browser level security. So hence काफ़ी question आए थे इसको लेके. I was following up this news. So a lot of questions were being asked, like, is it a VPN? No, it is not a VPN. Private relay is Apple's technology to offer secure browsing on the browser itself, right? Cool. Let us move on. And Adani, which is a well-known corporate house in India, right? Gautam Adani. So Adani has floated a company which is now going to manufacture wind turbine generators in India. Guys, please understand, another massive news for India, because wind turbine technology is something which was largely the gameplay of US and European companies. Companies like GE, Vestas, they used to dominate the wind power technology, the wind turbine technology all over the world. Then came a company in India called Suzlon. उसने wind energy का definition ही इंडिया में बदल डाला, और उसके बाद इतने wind farms लगने चालू हुए in India, largely in the western parts of India and southern parts of India, because these places are windy. A lot of wind is there, and you need constant wind to really garner from your investment, right? And it is clean energy, 100% clean energy. So jumping into this bandwagon now, India is also going to manufacture wind turbine generators, and is going to compete with the likes of companies in US and Europe. So काफ़ी खर्चा भी बचेगा हमारा import में, and we will have homegrown technology and homegrown companies. So
huge advantage for us. Now, which company has set it up? So Adani Enterprise Limited, AEL, has set up this company, and this company is called Mundra Windtech Limited, right? Mundra Windtech Limited, sorry. So Mundra Windtech Limited, which is a Adani owned company, is going to manufacture wind turbine generators in India. Okay, next one. So next one is Jeff Bezos is going to travel to space on I think 18th of June. I am not too sure, or 20th July, sorry. So he is going to fly to space on 20th of July, Jeff Bezos, and is going to travel in he is going to sit in the very first manned space flight for Blue Origin. That is the company which he helped he founded some time back, the space research company. Blue Origin competes against SpaceX, which was founded by Elon Musk, and the capsule or the shuttle which carries people into space. So SpaceX have something called the Dragon capsule, whereas Blue Origin has something called New Shepard. So Jeff Bezos is going to be the first passenger of New Shepard, and he would be accompanied by his brother Mark Bezos and a third person also who has paid a significant sum of money to be a co-passenger with Jeff Bezos. So with this, it will be another private company sending out people into space, and a lot of speculation is there because Jeff Bezos is flying himself as the very first passenger of the New Shepard capsule. Safety, security, all those questions are there. So yes, let's just keep our eyes open for 20th of July, and there would be one more company sending out people into space. And with this, private space travel will not just be left as a monopoly of SpaceX, but there would be more companies participating or joining that bandwagon in the private space exploration category, right? Governments तो करती ही हैं already. चलिए, this also came out as a very nice article in terms of medical research. So finally there has been a breakthrough in preventing dengue. एंड डेंगू एंड चिकनगुनिया हमें पता है कितनी परेशान करने वाली बीमारी है. वी ऑल मस्ट बी नोइंग समबडी और द अदर जिसको डेंगू हो चुका है, एंड इट लीड्स टू ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट एंड इज़ अ टेरिबल डिजीज़. अननेसेसरली एक मच्छर के काटने से आप इतने बीमार हो जाते हो, पीपल डाई. It's a terrible thing, right? So a doctor in Germany has investigated that by injecting or by breeding mosquitoes with a strain of a bacteria which is naturally existing and safe for humans, called Wolbachia. So Dr. Scott O'Neill has done this discovery, and he figured out that breed mosquitoes with Wolbachia and with the bacterium Wolbachia, and they would not be able to transmit the dengue parasite into humans. And as a result, it was already being tested, and the outcome is that there has been 77% reduction in cases of dengue worldwide. And all this is being done under a program called World Mosquito Program. There are programs which you are not even aware of, जिन पे हम ध्यान नहीं देते, but their research is so significant कि एक तरफ तो कोविड है, but what about the long term killer? कोविड ने शॉर्ट टर्म में जितने लोगों को मारा, diseases like diabetes, dengue, they kill more people over a very longer period, and they go unnoticed. Nobody cares for them. So there are specific group of people who care and who work out the solutions to these problems. And Dr. Scott O'Neill from World Mosquito Program is one of them. And just reminding you of the name of the bacteria, it is Wolbachia. Okay. एंड फ्रेंच ओपन बस अभी हाल फिलहाल ख़त्म हुआ है. अगर आपने मेरी स्पोर्ट्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स में सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में बताया है, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑफ विच फ्रेंच ओपन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोला गारो ऑन द नेम ऑफ द स्टेडियम वेयर इट इज़ प्लेड. राइट नाउ for the first time in the men's category, men's singles,
it was Novak Djokovic who went on to win the men's singles, but that was okay because it was a top seeded men's player who went on to win. In the women's category, interestingly, nobody from the top seeded category went on to win. Naomi Osaka, she pulled out. Venus Williams, she didn't proceed too much in the event. She didn't make it to the finals. Serena Williams, sorry. So nobody from the real top seeded category won. It was a surprise जहाँ पे कि it was the match, the final was between people who were not in the top rank but way below. So the final was played between the names are very difficult. Barbora Krejcikova of Czech Republic and Anastasia, I just can't even pronounce the surname, it's so complicated, of Russia. I'm sorry, no ill feelings, but it's a complicated surname. And eventually the Czech player, she won, Barbora Krejcikova. And yes, that is the news, that she is the winner of the French Open singles tournament of 2021. Right? चलिए. ओके, G7 summit हाल फिलहाल ख़त्म हुआ. And in G7 is a group of 7 pretty rich countries in the world, right? And or you can even call them they not really the richest because it does not include some of the richest countries in the world, but the rich countries in the world are part of the G7 group, 7 countries. And of this, a resolution was taken to counter China's Belt and Road Initiative. Now, what is Belt and Road Initiative? So, China has created an initiative in 2013 where they said, let's make China the manufacturing hub of the world, and सारी कंट्रीज़ में हम नेटवर्क बना देंगे हमारा सामान भेजने का, बी इट ईस्ट बी इट वेस्ट. एंड 100 countries are signatories to the Belt and Road program. And imagine 100 countries they have gotten to sign up. If you look at the image which is here, the world map, all the countries apart from China that are highlighted are part of the Belt and Road program. Really difficult for India to survive because India इकलौती country है which is surrounded by countries which are part of this program. Bangladesh is a signatory, Nepal is a signatory, Sri Lanka is a signatory, Pakistan is a signatory, Middle Eastern countries are signatories. So India is absolutely surrounded, but sole country which is not a signatory. और दूर जाके कहीं पे Japan is not a signatory because Japan is anti-China, and Australia is not a signatory because that has become anti-China now. So just imagine the pressure that these countries जो उन्होंने sign नहीं किया उस pact को, they are under, and US definitely is not a signatory. So now these G7 countries have come together and said कि हमें कुछ करना पड़ेगा because this has become too much and makes one country too powerful. So these countries together have said that we need to create alternative manufacturing hubs, we need to create alternate trade routes, and trade routes which compete equally well with China's Belt and Road Initiative. So with this, this could be a good news for India. India really hasn't commented as yet because with this it needs to be seen that what the policies would be. Would it mean free trade, open trade agreement and all? So since no G7 countries have taken this resolution, they haven't yet reached out to any other place. They said we need to make more manufacturing hubs all over the world. So India could be a big beneficiary because India has that manufacturing prowess. India has that potential to compete against China. But India really hasn't commented officially because अभी तक officially India के पास कुछ आया नहीं है, तो India ने भी official statement इस पे कोई दिया नहीं है. Okay. Next one. And this is more about data science and technology. तो हमारा जो कोविन ऐप है, कोविन ऐप में हम रजिस्टर करते हैं कि मेरे को जाके वैक्सीन लगाना है, या वो आपसे आधार नंबर लेते हैं जब आप वॉक इन करते हो इन मैनी प्लेसेस जहाँ पे लोग कोविन नहीं यूज़ कर सकते. आप वॉक इन करते हो या आप जाके सेंटर पे अपने आप को रजिस्टर करते हो कि मेरे को वैक्सीन लगानी है, वो डेटा कोविन पे शेयर होता है. सो ऑन दिस गवर्नमेंट हैज़ समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, which the government uses
टू मॉनिटर द एंटायर वैक्सीन फ्लो. सो कोविन में सप्लाई कितनी है, कहाँ पे किन सेंटर्स में वैक्सीन अवेलेबल है, कितने लोगों को लग गया, कौन रजिस्टर हुआ, पूरा डेटाबेस है, राइट. इट्स अ बिग ERP ऑफ फॉर द वैक्सीनेशन प्रोग्राम. एंड this electronic vaccine intelligence network is something which government is using for end-to-end monitoring of the vaccine program, which includes monitoring the temperature of the storage units, to the movement of the vaccine as part of the cold chain. किस ट्रक में चढ़ा, किस व्हीकल में चढ़ा, कितने किलोमीटर मूव किया, किस डेट को चढ़ा, किस डेट को अनलोड हुआ, अभी क्या करंट सप्लाई चल रही है. So everything is being monitored, and all this is being enabled by technologies like blockchain, IoT, ERP. So a lot of technology going in, and obviously monitoring and evaluating so much of data means a lot of data science. So just wanted to share, this is a beautiful article because I wanted to share this with you, how much technology and data plays a role in our daily life, even in when it comes to small things like vaccination. हम शोर मचा देते हैं वैक्सीन मिल रहा है नहीं मिल रहा, बट उसके पीछे कितना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हुआ. एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय द वे, राइट. इट इज़, इंडिया इज़ नॉट चाइना कि आपने एक जगह लोगों को बोला कि लगाना ही लगाना है. इंडिया हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोग्राफिक एंड डेमोक्रेटिक सेटअप. सो that makes things so difficult, and that also makes it a very complex vaccination program for any country in the world. It is one of its kind. So yeah, the huge backbone behind our vaccination programs are the application CoWIN and the electronic vaccine intelligence network, which is in real time monitoring what is happening to the entire program and the progress of it. So it was a beautiful article which I came across, and I thought I must share it with all of you guys. ओके. एंड बिटकॉइन हमने बहुत सारे वीडियोस में इसकी डिस्कशन की है कि बिटकॉइन का क्या, बिटकॉइन कौन सी गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, डिसअप्रूव कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पे. बट नाउ एवेंचुअली वन कंट्री हैज़ गॉन अहेड एंड सेड वी मेक बिटकॉइन लीगल, कम टू आवर कंट्री, पे इन बिटकॉइन. एंड काफ़ी दिनों से इसके न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे स्निपेट्स आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रही हैं. एल सल्वाडोर पे जैसे हमारे दुकानों में लगा रहता है ना, पेटीएम का QR कोड लगा रहता है, स्कैन एंड पे, एंड भारत पे का QR लगा रहता है. सो एल सल्वाडोर में बिटकॉइन एक्सेप्टेड हेयर के स्टिकर्स लगे हैं. आओ दुकान में सामान खरीदो, ओके, डोंट हैव मनी, नो वरीज, पुल आउट योर फोन एंड पे वाया बिटकॉइन. क्रेजी. We haven't even reached there, right? We don't even know what it is. We don't even understand, so many of us, that what really is a Bitcoin. But there are countries which have gone to the extent that it has become their mode of payment and transaction on a regular basis. And to this, I was also reading that while World Bank really hasn't approved El Salvador's request to make Bitcoin a legal tender, but the president Nayib Bukele, he mentioned in a press conference that they have received positive feedback from IMF. Now it is to see what are those world approvals and what not. But also at the same time, El Salvador's own currency, they don't use their own currency, they use US dollars to as a legal tender. And with Bitcoin coming in, अब देखना है कि how would Bitcoin and US dollar will play against each other, because both become legal currencies or legal tenders in El Salvador. Okay, so this was really really interesting कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है. हमें we need a lot of catching up to do in that direction. या कोई हमें समझा ही दे यार कि बिटकॉइन होता क्या है, ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए कि we can weigh the pros and cons. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, करने ही नहीं देंगे. Should be informed decision making which should be in play. Okay, and one more news. Last video we discussed Tata Digital buying into Big Basket. उसके अगले ही हफ्ते न्यूज़ आ गई, Tata Digital has bought majority stake in 1mg. So 1mg is a online pharmaceutical delivery system. काफ़ी सारे आ गए हैं अब, PharmEasy, NetMeds, 1mg. तो टाटा ने 1mg को ख़रीद लिया है, और इसके साथ ही रिलायंस ने NetMeds को ख़रीद लिया है. सो अब यही है, एंड ऑफ द डे तो ऐसा ही लग रहा है कि धीरे धीरे जो भी चीज़ें हम खरीद रहे होंगे, हमारा जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग होगी या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग होगी या स्टोर में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे, बस दो ही जगह से खरीद रहे होंगे, या तो टाटा या रिलायंस, या टाटा या रिलायंस, कहीं पे ऐसा छुपा होगा. मतलब कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो स्टारबक्स हो जाता है,
बस वेट कर रहे हैं कि रिलायंस अगला कॉफ़ी चेन कब खरीद लेता है, सो दैट इट कैन कम्पीट अगेंस्ट टाटा. And if you look at groceries, so Reliance has entered with JioMart, Tata has bought Big Basket. If you look at, I mean, I just can't think. There are so many places where they both are just competing. Medicines में भी आ गया, so 1mg with Tata and Netmeds with Reliance. But important to know, right? These articles, these ownership changes, they can come in as questions in the entrance. So please, Tata has bought 1mg, Reliance has bought Netmeds. Okay, chaliye. Okay, one more way India is trying to reduce its pollution and oil import. So India is trying heavily to move to ethanol blended fuel. One, because it is cleaner than pure gasoline, and two, it is ethanol is largely homegrown in India, तो वो import करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत खर्चा बचेगा. यहाँ तक कि एक आर्टिकल मैंने ये भी पढ़ा कि गवर्नमेंट ने FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बोला है something, please don't hold me responsible for this, but I'm just trying to recall, some 75,000 ton of rice or something government has asked FCI to release for ethanol production in India, जिससे कि जितना एथेनॉल ब्लेंड बढ़ता जाएगा पेट्रोल में उतना ऑयल इंपोर्ट कम होता जाएगा, राइट, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द ब्लेंड विल इंक्रीज परसेंटेज ऑफ दैट. सो अभी इंडिया यूज़ करती है लगभग 9% एथेनॉल. India's plan is by 2025 to increase it to 20% ethanol blended fuels in the country, and to do this government is putting in $7 billion to improve the ethanol blend, to increase the ethanol blend percentage in the country. ओवरनाइट नहीं हो सकता. अभी आपने स्कूल में पढ़ा होगा एथेनॉल आता है मोलासेस से, विच इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, राइट. शुगर प्रोडक्शन से मोलासेस आते हैं, जो गन्ने का जो भी भूसा वूसा जो बचता है, दी फाइबर, उससे शुगर केन से मोलासेस, जो उसको मोलासेस कहते हैं, उससे एथेनॉल बनता है अभी. बट गवर्नमेंट इज़ नाउ इवेलुएटिंग अदर एवेन्यूज़ टू इंक्रीज एथेनॉल प्रोडक्शन, ऑफ विच it would be like food grains which have gone bad, or inferior quality food grains which are produced in the country, and then as part of the minimum guarantee program and mandatory buyout program is bought by the government from farmers, but उसका कुछ यूज़ हो नहीं पाता, सड़ता ही रहता है. तो इन सबको आप एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा, एंड हेंस दी FCI आर्टिकल ऑल्सो विच आई शेयर्ड विद यू. कूल. सो yeah, that 20% ethanol blended fuel is the target by 2025, and that's the important article here. And now with all the top articles covered, comment में आप में से कुछ ने लिखा था कि सर आप क्विज क्यों नहीं करते एक छोटा सा, why don't you put questions? So yes, I have put 2 questions for you on the screen. They are on the screen. So one, Unbreakable is the autobiography of which sports person? And my second question is, Satoshi Nakamoto has invented what? So please do leave your answers in the comments. I would love to see them. And yes, more comments, more answers in the comments mean that आप लोगों ने वीडियो देखी है और आप क्विज तक पहुँचे हो और आपने क्विज को आंसर करने की कोशिश भी की है. सो आई रियली होप टू सी अ लॉट ऑफ आंसर्स टू दीज 2 questions, and I'll try and put more questions in my subsequent videos as well going forward. So with this, guys, I'll see you next week. Until then, bye from my side. Stay safe. Best wishes for your forthcoming entrances. CBSE की स्कोरिंग शीट भी आ गई है, सो जस्ट कीप एन आई कि आपका कैसा रिजल्ट आएगा, बिकॉज बेसिस दैट 10th 11th 12th का स्कोर मिला के. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक. अंटिल देन, बाय फ्रॉम माई साइड.